In this world, each and everything is possible. But what is durlabhaha, difficult to get, is yojakaha. Who is yojakaha? Yojayati iti yojakaha. One who joins, one who makes things happen, one who organizes is a yojakaha. For example, everything is there in your kitchen, at your home, right? But one who knows how to cook is important. Family members are there, events happening. So, event organizer is the one who gets everything going. So, let us find out through this story how a yojakaha is durlabhaha. प्रिय छात्राः, नमस्ते। मैं हूं आपकी संस्कृत आचार्य डॉक्टर नम्रता। नमस्ते संस्कृत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़िए। प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आरंभं कुर्मः। एकः ऊष्ट्रः अस्ति। देयर इज अ कैमल। ऊष्ट्रः स्वभावेन वक्रः अस्ति। Now vakrah is the most important word in this whole chapter. Vakrah means tedha, crooked, curved. So this camel is curved by his nature. Whatever he thinks is not straight. He is not simple-hearted, simple-natured. जो भी सोचता है वो टेढ़ा मेढ़ा सोचता है. स्वभावेन वक्रः अस्ति. सः सर्वदा दोषः एव पश्यति. सर्वदा किं पश्यति? दोषः एव. He always sees faults. एकदा सः वने अटति. So these kind of people are never happy, who sees faults in each and every person, in each and everything. Function कितना भी अच्छा हो, party कितनी भी अच्छी हो, they are expert in finding that one thing that is faulty. So he is one of them. He doesn't see the beautiful things in the person, but always finds fault. देखते हैं कैसे ये सुखी नहीं रह पाता है. एकदा सह वने अटति. अटति भ्रमति. He roams around a forest once. क्यों once बोला? Because he is the person who is in the desert, right? मरुस्थले अटति न वने. परंतु let's imagine वने अटति. He is now roaming in a forest. मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकं शुकं पश्यति. शुकः is a word for a parrot. On the way, he sees Shukaha, meaning a parrot. Ushtraha Shukaya Kathayati. Now you must be wondering, it is like accusative case, Shukam Kathayati. He says to the parrot, but why Shukaya is written in dative case, Chaturthi Vibhakti? It is because of Kathayati. He is saying to the parrot, but like for the parrot. Intention is for the parrot. That's why for, but in regular translation, you will be using to. He says, Hey Shuka, tava chanchuhu vakra asti. Chanchuhu is the beak. Your beak is curved. Shukaha lajjam anubhavati. So, obviously, कोई हमारे बारे में कुछ negative comment करेगा. So, we think that person is thinking like this for us. So, we also feel the same. अगर कोई कहेगा तुम मोटे हो, तो हम भी फील करेंगे हम मोटे हैं. कोई कहेंगे तुम ज्यादा लंबे हो, तो हम वही फील करेंगे कि हम ज्यादा लंबे हैं. So don't let other judge you. So this parrot becomes embarrassed. लज्जा आने लगी उसे कि अरे मेरी चोंच टेढ़ी है. चंचुः वक्रा अस्ति. उष्ट्रः हसति अग्रे गच्छति. Agre chalati. So this camel is like laughing on him and then goes ahead. Now this sentence will remain the same at the end of each and every paragraph because इसका काम ही है दूसरों पे कमेंट करना, हंस के आगे बढ़ जाना. And every time जिस पे वो कमेंट कर रहा है, that one is getting embarrassed. मार्गे सह कुक्कुरम पश्यति. On the way he sees a dog. Ushtraha kukkuraya kathayati. He says to the dog, Hey kukkura, tava puchham vakram asti. Your tail is so curved. Kukkuraha lajjam anubhavati. Dog gets embarrassed and this Ushtraha hasati
agre chalati. He laughs and then goes ahead. After that, there comes a bakah. Marge bakah asti. Now bakah refers to a crane. Not the crane you play as a toy, but a crane bird. Bagula we call in Hindi. Baglo in Gujarati. Bakam drishtva ushtraha vadati. After seeing the crane bird, the camel says, Tava griva vakra asti. Your neck is so curved. Oh, atra api saha lajjam anubhavati. Anantaram bakah ushtram prati pashyati apina. And then this bagula never sees, the crane bird never sees eye to eye to the camel. वो avoid ही करता है. Now comes the most intelligent animal, Shrigalah, the fox. Marge Shrigalah milati. On the way he meets fox. Shrigalah pritchati. The fox asks him, Ushtra bhratah katham asti swasthyam samichinam va. So this is a way to ask how are you. Katham is how are you. And swasthyam samichinam va. Va is or. क्या आपका स्वास्थ्य अच्छा है ना? Is your health good? Is everything all right? So this is the way to ask. You can just keep these two sentences. Cancel ushtra of course. Katham asti swasthyam samichinam va. Keep this in a box so that next time you meet anyone and you want to greet, how are you? Is your health good? So this is a new way to communicate hi, hello in Sanskrit. So please mark this. Ushtraha vadati. Now Ushtra says all the things he saw today and how everything is curved. What all things? One by one he says. Ushtraha vadati, he says, swasthyam samichinam. My health is good. Kintu, but anyat kimapi samichinam nasti. Nothing else is good. Shukasya chanchuhu vakra. The beak of the parrot is curved. Kukkurasya puchham vakram. Here is the kukkuraha and the puchham. The tail of the dog is curved. Bakasya griva vakra. Here you can clearly see how the neck of the crane bird is curved. So he says my health is good but everything else is not good. Everything else is not straight. It is all curved, crooked. Now he knows, he's the most intelligent as I said. Shrigalah vadati, the fox says, Shukasya chanchuhu vakra, kintu saha manushyavarnim vaktum shaknoti. Whatever I have done in this pitaha varna, yellow color, is all the good things each and every one of us have. For example, taking the example of Shukaha, parrot. The beak of the parrot is obviously curved, but इससे हम पूरी बुक को जज नहीं कर सकते. The person, the Shukaha, the bird, is like he can say Vaktum Shaknoti, is able to say how human beings talk. So the language of human beings, he knows exactly and he knows how to speak it. Once we visited Ribra Gurukul, there we saw a lot of parrots and we were making the parrot talk. We were saying Mithu Mithu and he was repeating Mithu Mithu. And then we started, please say Swaminarayan, Swaminarayan. At the end, he was able to say that. So how quickly he gets the words. You may have heard parrots say Rama Ram also. Swaminarayan. So this is the way they can clearly say Manushyavani, the language of human beings. Kukkurasya puchham vakram kintu saha swami bhaktah asti. Although the tail of the dog is curved, but he has a great commitment and devotion towards human beings. That's why we use it for security guards and also in the army. Bakasya griva vakra kintu tasya ekagrata prachalita. Ekagrata is focus. In the shlok where 5 lakshana of a Vidyarthi is given, there also the focus like a crane bird is prasiddha. Prasiddha, pracharita is one and the same. So although the neck of the crane bird is curved, but the focus is popular. Now focus के बारे में एक बात बताती हूँ. He is also intelligent.
करता है ये, एक पैर पे खड़ा रहता है इन द वाटर, ओके, एंड ही लुक्स फॉर फिशेस, बट अगर फिश को डायरेक्टली वो खाएगा तो फिशेस विल ऑल रन अवे। तो वो क्या करता है, आंखें बंद करके एक पैर पे खड़े रह के दूसरा पैर ऐसे क्रॉस करके पानी में बहुत देर तक शांत खड़ा रहता है, जिससे हम उसकी एकाग्रता को हम प्रचलित कहते हैं। एंड देन सभी मछलियां वहां आती है, जैसे कि ओ कितने बड़े तपस्वी है, चलो चरण स्पर्श करके आते हैं, ऐसे करके बहुत फिशेस वहां आते हैं और फिर छुपके से वो आंखें खोलता है, फटाफट से 2-3 मछलियां खा लेता है, एंड देन दिस कंटिन्यूस, ओके। बट कहने का मतलब उसका इंटेंशन जो भी हो, फोकस उसका बहुत अच्छा है। तो दिस वे द फॉक्स इज लुकिंग एट सम पॉजिटिव थिंग अबाउट these 3 which was complained by the camel. Bhavatah sarvani angani vakrani santi, and then he says, camel, all your each and every part of your body, your neck, your hump, your legs, each and everything is curved, sarvani angani. Then also there is one positive thing about you, kintu bhavan marubhumyaha nrupah asti, you are the king of the desert. So this is the positive thing in spite of having all these body parts curved. तो ये ऐसी बात हुई कि हम हमेशा कहते हैं ना, इस तरह से एक उंगली आप किसी पे डालोगे तो ये मत भूलो कि these 3 fingers, ये 3 fingers आप खुद के ऊपर भी आक्षेप कर रहे हो. So when you say one faulty thing about others, 3 faulty things are already on you, but you are not able to see it unless you have a darpanaha, a mirror. तो मिरर के सामने ही हमें खुद के फॉल्स पता चलेंगे, अदरवाइज तो हम हमेशा दूसरों की ही फॉल्स देखते रहेंगे. So this we learned from this chapter, योजकः तत्र दुर्लभः. The fox continues, अपि च तेषां चञ्चोः पुच्छस्य ग्रीवायाः च प्रयोजनम् अस्ति, निरर्थकं नास्ति. Then he adds one more point, there is a prayojanam. Prayojanam means a purpose. कुछ तो उपयोग है, किसका? Of the chanchu, the beak, the puchha, the tail, and the griva, the neck. Each and everything is useful. ऐसा तो नहीं है ना कि पूंछ नहीं होगी तो कुत्ता चलेगा, नेक नहीं है तो बगुला जीवित रह पाएगा, बीक नहीं है तो वो खाना खा पाएगा, ऐसा तो नहीं है. सबका कुछ ना कुछ प्रयोजन, यूज है. निरर्थकम नास्ति, नथिंग इज यूजलेस. Now the name of the chapter, Yojakah Tatra Durlabha, is coming from this popular Sanskrit shlok. You can see the Chaturtha Charan is same. Why Durlabh? So they have given 3 different things that are possible, but the 4th one is difficult to get. Let us see one by one what it means. Amantram aksharam nasti, nasti moolam anaushadham, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः. अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति नहीं है. क्या नहीं है? अमंत्रम अक्षरम. अक्षरम is a letter. In Sanskrit there is no letter that is amantram, which has no sound. हम कोई भी अ, इ, उ, कोई भी लेटर मुंह से बोलें, उस सब में एक साउंड है. ठीक है, नथिंग इज लाइक साइलेंट. हम बोल रहे हैं, लैंग्वेज है, भाषा है, नथिंग इज साइलेंट. यू आर स्पीकिंग ऑल थिंग्स. सो देयर इज नो साउंड, दैट इज नॉट अ मंत्र. अमंत्रम नास्ति. सो ईच एंड एवरी अक्षर इज अ मंत्र बाय इटसेल्फ. इट्स यूज्ड इन द मंत्र. एक छोटा बच्चा मंदिर में जाता है और उससे जो आता है ABCD, वो भगवान के पास बोलता है ABCDEFGH. आसपास सब कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो? तो वो कहता है मुझे ना तो कोई श्लोक आता है ना तो प्रार्थना आती है, मुझे जूनियर KG में ABCD सिखाया है, तो मैं वही भगवान को कहता हूँ रोज, जिससे वो खुद के लिए एक ऐसी प्रार्थना बनाए और मेरे मनोगत विचार मैं उनको प्रकट करता हूँ.
तो कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जिससे कोई मंत्र या श्लोक ना बन पाए। अमंत्रम अक्षरम नास्ति। नास्ति मूलम अनौषधम। मूलम यानी कि प्लांट, आप कहते हैं कंदमूल, तो वो मूल यानी कि प्लांट। ऐसा कोई प्लांट नहीं है इस धरती पे जो अनऔषधम, विदाउट एनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। यू से नीम, तुलसी और एनी अदर प्लांट, सब में कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो कोई ऐसा मूल नहीं है जो अनऔषध हो। अयोग्यः पुरुषो नास्ति। हमें हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स कितना भी बोल ले कि तू तो बेकार है, तुझसे तो कुछ नहीं होगा, तू लाइफ में कुछ उखाड़ नहीं पाएगा, लेकिन यहाँ लिखा है अयोग्यः पुरुषो नास्ति। हो सकता है आपका पढ़ाई लिखाई में मन ना हो सकता है आप आगे जाके कोई ऐसी फील्ड लो जिसमें संगीत में आपकी रुचि हो, या फिर कोई गेम या स्पोर्ट्स में रुचि हो, पेंटिंग में रुचि हो, या जस्ट निटिंग, टेलरिंग। इतने बड़े काम हो सकते हैं ये, जो छोटी छोटी स्किल्स हमें जो आज लगती है। सो प्लीज बी केयरफुल कि अभी से ही आपका इंटरेस्ट किस में डेवलप हो रहा है, उसी को आप नरिश करते जाइए, क्योंकि अयोग्यः पुरुषो नास्ति। देयर इज नो पर्सन हु इज नॉट सुटेबल, नॉट वर्थी। हम सबकी एक कीमत होती है, लेकिन अलग अलग स्थान पर। वैसे ही इन 3 का कंक्लूजन है कि ये सब तो पॉसिबल है, बट व्हाट इज नॉट पॉसिबल टू गेट इजीली? योजकः तत्र दुर्लभः। दुर्लभः डिफिकल्ट टू गेट। योजकः one who organizes, one who joins everything. सभी रॉ इंग्रेडिएंट्स है किचन में। There is some person who knows how to combine all things. There is one huge family event, but कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सभी को पार्टिसिपेट कराना है। There is one organizer who knows that. There are all the books in the library, but एक लाइब्रेरियन को पता होता है कौन से बच्चों को, कौन से एज ग्रुप को कौन सी किताबें देनी है। सो दैट्स व्हाई इन ईच एंड एवरीथिंग योजकः इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। इन दिस स्टोरी हु इज द योजकः? शृगालः। फॉक्स को अच्छे से पता है कैसे जंगल में यूनिटी रखनी है और मुंह तोड़ जवाब देना है, जिससे किसी को खराब भी ना लगे और सबकी अच्छाई भी सामने आए। Do some Paropkar today. Share this video to those who are still confused in Sanskrit. Join our support system group exclusively for students of class 5 to 7, 8 to 10 and 11-12 onwards. Keep learning and have fun with Sanskritam. If you found this video helpful, contributions are open and welcome to the UPI number given in the description box. You can also contact WhatsApp number 8511 499 555. It's completely optional and your contributions will help us to create more free videos for all of you. धन्यवादः।